Hello children, in this video I'm going to share info regarding fashion capitals. What are fashion capitals and why they became fashion capitals? This is chapter 3.2 of class 12 fashion studies. Children, you have this chapter in term 2 examination. So in this video I'm going to share details about this particular chapter. I will surely be coming up with another set of video wherein I will also be sharing info regarding the important questions for practice for the same. So let's get started. We know that since past, not few years, but many years, I should say centuries, and that is how we call it as history. Fashion emerged from the higher class of the society. It belonged to the higher class of the society. So हमेशा से मतलब अभी नहीं बट सालों पहले से हमें ये पता है कि फैशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हायर क्लास, जो एलीट क्लास होती है सोसाइटी की. हमेशा वो प्रिविलेज्ड थी, है और शायद रहेगी भी इवन टिल डेट. यस, बट अब आज के डेट में क्या फर्क है, अब हम लोग सब फैशन कॉन्शियस हो गए. लेट इट बी एनी क्लास, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, वी ऑल कैन बी फैशनेबल. बट कहाँ से इमर्ज हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इट इमर्ज फ्रॉम द कोर्ट्स एंड रॉयल पैट्रनेज. अब कौन सी सिटीज है जिनको हम फैशन कैपिटल बोलते हैं? मिलान, रोम, वेनिस, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बार्सिलोना. ये सब फैशन कैपिटल बने. क्यों बने? बिकॉज उनके पास में कल्चरल पावर थी. उनका कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो फैशन को डेवलप कर सके. अगर आज की बात करें तो हाँ, इंडिया भी एक फैशन कैपिटल बनता जा रहा है. इट इज इमर्जिंग एज अ फैशन कैपिटल. और इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जो आपके अगेन फैशन कैपिटल्स बनते जा रहे हैं. यहाँ पे फैशन कैपिटल क्यों इसको भी बनता जा रहा है दिल्ली, इंडिया, we will get to learn about that. अभी धीरे धीरे हम आगे इसको समझेंगे. But as of now, fashion capital is a place wherein the production, manufacturing, designing, retailing, that is selling, marketing, everything happens. So the aura and allure of Paris as the fulcrum of couture and high fashion continues to reinforce its preeminent position as a fashion capital and draws international designers to present their collection. So Paris एक epicenter, एक center of attraction बन चुका है फैशन का. And it is not आज बना है, years से, बहुत सालों से वो ऐसा ही है. क्यों ऐसा है? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि डिजाइन करने के लिए गारमेंट्स डिजाइनर्स हैं, जहाँ पे उनके सेलिंग के लिए मार्केट है, ह्यूज मार्केट है, और जहाँ पे एंटर करने के लिए हर कोई इंटरेस्टेड है. इसीलिए वो फैशन कैपिटल बना है. सो द क्वेश्चन दैट यू नीड टू लर्न हियर इज व्हाट इज अ फैशन कैपिटल. और अब देख लेते हैं उसका आंसर क्या है. अ फैशन कैपिटल इज अ सिटी दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फैशन इंडस्ट्री. अब अगर फैशन कैपिटल नहीं होगी तो फैशन का डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फैशन इंडस्ट्री. और किस तरह से इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन मतलब उस गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी रिटेलिंग, रिटेलिंग होता है सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. जो बाहर शोरूम्स होते हैं, मार्केट में शॉप्स होती है, वो रिटेल हो गई. होस्टिंग ऑफ फैशन इवेंट्स. होस्टिंग ऑफ फैशन इवेंट्स मतलब wherein you can have trade fairs organized, wherein you have fashion shows happening or trade promotion activities happening in respect to fashion industry. So वहां पर ये वो एक fashion event center भी बन जाता है. And lastly, it is that business related trade fairs also happen at this particular place. So that's why it is called as a fashion capital. Furthermore, next part of this particular answer should be a fashion capital has a distinctive culture that inspires not only the fashion professionals but also the citizens of the country.
उसका जो कल्चर है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, मैं इस तरह से उसको कोट करती हूँ कि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वाइब्रेंट होता है, इतना एक जैसे मैग्नेट होता है ना, वो फैशन उस तरह से मैग्नेट के जैसे अपनी तरफ खींचता है लोगों को। तभी लोग वहाँ के डिजाइनर्स को फॉलो करना चाहते हैं, लोग उस जगह के गारमेंट्स परचेज करना चाहते हैं, या लोग उन ब्रांड्स को या डिजाइनर वेयर को पहनना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ फैशन कैपिटल। अब जो बुक में हमारे मेंशन्ड है, ये बिग 4 फैशन कैपिटल्स मेंशन्ड है, दैट सेज लंदन, मिलान, न्यूयॉर्क एंड पेरिस। बट एक और बाद में उन्होंने और एक्सप्लेन किया है, फिफ्थ वन, वो है टोक्यो। सो एज वी प्रोग्रेस हम टोक्यो को भी कवर करेंगे जरूर इसमें। सो व्हाई वी हैव फैशन कैपिटल्स, और एंड व्हाई and how it helped grow its business at large. So if I talk about myself, so children, when I was studying, that is what I keep telling students, that when I was studying in college, at that point in time, there used to be no international brands in our country. बट आज की डेट में अगर आप देखो तो कितने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडियन मार्केट में हैं। तो वो क्यों है, ऐसा क्यों है? बिकॉज पहले बहुत कम लोग इंटरनेशनली जाते थे घूमने के लिए, बहुत कम लोगों को एक्सपोजर था इंटरनेशनल ब्रांड्स का, and that is one of the major reasons why we didn't had international brands in Indian market, because यहाँ पे मार्केट ही नहीं थी उसकी, बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होते थे इंटरनेशनल ब्रांड्स को परचेज करने में, या कम लोग अफोर्ड कर पाते थे. लेट वी कैन पुट इट इन दिस मैनर ऑल्सो. सो दैट इज वाई that was not the time when the international brands were demanded in our country. But today is the time when it is needed, it is demanded, and so we have it here for us. So क्या रीजन है उसके पीछे? इट इज वन, इंटरनेट, एंड दूसरा ग्लोबल कनेक्टिविटी. पहले कोई रिलेटिव बाहर जाता था तो उससे स्पेशली मंगाते थे, अच्छा ये ब्रांड का ये चीज ले आना, वो ले आना, ठीक है, बिकॉज हमें पता ही नहीं था कि ये चीज हमारी कंट्री में ही बन रही है. सो जब वो बाहर से लेके आते थे और कहीं पे टैग टर्न करके कोई देख लेता था गलती से, तो वहां पे लिखा हुआ मिलता था मेड इन इंडिया. सो दैट इज हाउ धीरे धीरे पीपल गॉट टू नो कि अच्छा हमारी कंट्री में भी ये ब्रांड्स बनते हैं. तो पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड टू द फैशन इंडस्ट्री, उनको पता भी नहीं होता था कि ये गारमेंट्स सब यहाँ बन के ही बाहर जा रहे हैं. So the reach of internet and global connectivity at the click of the button have been instrumental in sharing information, which has led to the emergence of other fashion centers around the globe. And what are the names of the other fashion capitals? जो मतलब centers जो अब capitals भी बन गए. Tokyo, that is in Japan, Shanghai in China, Mumbai and Delhi, as I did mention, India, Toronto is in Canada, Dubai is in UAE, and Dusseldorf is in Germany. So that is how ये जो एरियाज है ये बन गए हैं अब फैशन कैपिटल्स. हमारे कोर्स में 5 मेजर फैशन कैपिटल्स है. सो वी विल स्टार्ट विद लंदन एज द फर्स्ट फैशन कैपिटल. अब लंदन फैशन कैपिटल कैसे बना, वहां पर पहले कैसे स्टाइल्स होते थे और आज की डेट में क्या है. तो लंदन के में पहले जो था, कस्टम टेलरिंग बहुत फेमस थी. कस्टम टेलरिंग का क्या मतलब होता है, उसका क्या वर्ड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में, bespoke. So custom tailoring for men largely was very much popular in the traditional British culture, I would say it like that. तो क्या होता था कि पहले वो लोग अपनी इंडिविजुअल मेजरमेंट पे गारमेंट बनवाते थे और पहनते थे. सो कस्टम टेलरिंग में मतलब कि बहुत ही पॉलिश्ड वे में, जैसे इधर भी स्लाइड में आप देख सकते हो, राइट बॉटम में आई हैव प्लेस्ड दिस पिक्चर वेयर इन देयर 4 मेन वियरिंग सूट्स, राइट. सो कस्टम टेलरिंग में आपकी इंडिविजुअल मेजरमेंट पे ऐसे बिल्कुल फॉर्मल वेयर सूट्स एंड ड्रेसेस वर मेड. तो ये फैशन कैपिटल कैसे बना? एक तो इसमें कस्टम टेलरिंग था, दूसरा स्ट्रीट फैशन बिकेम वेरी पॉपुलर इन लंदन. और स्ट्रीट फैशन क्या होता है? स्ट्रीट फैशन ऐसा स्टाइल होता है जो आप नॉर्मली यू सी पीपल अराउंड वियरिंग दैट स्टाइल, एंड इट हैज अ लॉट गुड अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी इन इट.
और क्रिएटिविटी के अलावा इंडिविजुअलिज्म भी होता है, मतलब as an individual मेरी creativity would be different from yours, so it also use it also expresses the individuality of an individual, and that is another reason why it became as a fashion capital. So British fashion is synonymous with traditional styles with impeccable tailoring as well as bespoke, that is custom tailoring for men. British fashion is also known for its unconventional creativity and expression of individuality through street fashion. And when you talk about the British ready-to-wear market, ready-to-wear market ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी 1960, और आई शुड से पॉपुलर हुई थी इस टाइम पे, और वो कहाँ पे हुई थी? कार्नेबी स्ट्रीट पे। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, उसकी क्या किसको सिनोनिमस, किससे सिनोनिमस है वो पर्टिकुलर स्टाइल्स ब्रिटेन के, राइट, एंड व्हाई स्ट्रीट फैशन इज पॉपुलर इन ब्रिटेन। सो ये तीनों जो पॉइंट्स है इनमें से क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। सो नाउ again, these are a few designs that I could pick from internet for you guys, so I could make you understand. So यहाँ पर आप देखोगे इन कलर्स में क्या है, यहाँ पर इतने कलरफुल गारमेंट्स है, कंफर्टेबल गारमेंट है, जिनको हम मॉड स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टाइल्स आए थे आपके हिप्पी फैशन के बाद में ब्रिटेन में, और ये बहुत ही पॉपुलर हुए थे बिकॉज they could coordinate it with different garments. जैसे कि फॉर जो ऊपर राइट कॉर्नर पे आप ग्रीन ड्रेसेस देख रहे हैं, सो लेगिंग्स के साथ में with the same legging you could change the upper garment in the same manner. जो बॉटम में है again with the same legging they could change, और इसमें कोई प्रॉपर ऐसे टाइट फिटेड गारमेंट्स भी नहीं है, एकदम फ्लोइंग, आई शुड से A shape, A silhouette के garments है. So these styles they they became popular in Britain. Then here I have this picture of this designer, very famous designer, Mary Quant. Right corner पे slide पे है ये picture, and this designer is the creator of mini length. So the garments that I have placed again are a few designs of this designer, designed by this designer. And इससे पहले कैसे styles होते थे? Women were not allowed to wear short dresses. They used to wear ankle length dresses and all. So Mary Quant is a designer who is known for the development of one mini length dresses, right? So एक ये चीज है, और दूसरा these dresses, what did they depict? ये डिपिक्ट करती थी उनका फ्री स्पिरिटेड एटीट्यूड, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग अबाउट मैरी क्वांट। नाउ what all things we did observe in the garments that were developed in Britain, in London, that helped it grow as a fashion capital. So सबसे पहला मैरी क्वांट ने जैसे शॉर्ट ड्रेसेस मिनी लेंथ डेवलप करी। तो शॉर्ट ड्रेसेस, और इनके ऊपर क्या होता था? प्रिंट्स होते थे, किस टाइप के? फ्लोरल प्रिंट्स, फ्लावर्स बने होते थे, पेजलीज जो हम लोग बनाते हैं ना मेहंदी वगैरह के डिजाइन में, हम अम्बी बनाते हैं, दैट इज अ पेजली डिजाइन। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योमेट्रिक शेप्स होती थी। दे ऑल्सो यूज ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफिक काइंड ऑफ डिजाइंस ऑल्सो ऑन दीज ड्रेसेस। सो शॉर्ट लेंथ ड्रेसेस होती थी, बट देन उनमें एलिमेंट ऐड करते थे, डिजाइन एलिमेंट, with the help of these prints. Then culottes were basically something like we wear the trousers divided, lower bottom garment. Then it is PVC raincoats with high boots. So PVC के raincoats होते थे, वो भी एक that also became very popular over there, and they were worn with high boots. That also became very popular as a streetwear. Then these styles fill the stores and boutiques throughout London and other parts of UK. So all these styles, they helped people understand, because एक चीज fashion कब होती है? When you find many people wearing it, and that is how it becomes fashion, right? And
Then apart from this, there are many fashion influencers also in Britain, ठीक है, who helped in the development of fashion. So वो fashion influencers कौन है? Supermodels, designers, celebrities, right? They all played an important role in bringing or influencing people to be fashionable. So examples of supermodel are Twiggy, then we have late Princess Diana, Kate Middleton, that is the, Princess Diana's daughter-in-law, then editor-in-chief of Vogue, that is Anna Wintour. Then you have the designers like Zandra Rhodes. I have their, pictures on the next slide for you guys. So Zandra Rhodes, Vivienne Westwood, John Galliano, Alexander McQueen, Stella McCartney, they all are famous designers of London. So ye sab, they played an important role in influencing people to be fashionable. So देखते हैं designers को भी. So here are the designers. Vivienne Westwood. आप अगर आप सिर्फ ये presentation देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, अगर इन designers के names search करो और इनके designs देखो, you would be amazed to see their designs. So creative, innovative designers. And you look at them also, so vibrant, like Zandra Rhodes, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, John Galliano. ये मेरे इतने favorite designers हैं, I would say. And when you look at their designs, you would be just filled with awe कि इतने बढ़िया designs भी बनाता है कोई designer, कैसे वो colors को mix करते हैं, कैसे वो elements उसके अंदर डालते हैं. Although Alexander McQueen is no more, he committed suicide long time back, but his brand is still there in the market. And you look at his footwear, just amazing footwear. Then you have Stella Mccartney, another very famous influencer of London. So they all played an important role in influencing fashion in the London market first, and then across the world. So that is how we get to know about them. So after London, the next fashion capital is Milan. अब मिलान में क्या important है जिसकी वजह से वो fashion capital बना? So इधर आप designs को देखो और फिर आप उसको समझो. इनके इटालियन स्टाइल जो है वो मेनली किस चीज से के लिए जाना जाता है? उनकी क्लासिक एस्थेटिक अपील. उसके अलावा गारमेंट्स प्रैक्टिकल होने चाहिए जो कि उनके लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करें, राइट? सो कॉम्फी गारमेंट्स होने चाहिए, कंफर्टेबल गारमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि उनमें काफी ड्यूरेबिलिटी हो, जिसको कि वो काफी टाइम तक पहन सके. सो इटालियन स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय classical aesthetic appeal, and with that what they want, practicality in the garment. और ये दोनों चीजें what do they help? They depict their lifestyle, right? So they are very simple and elegant garments, a few of them there in front of you. Then Italy's strength and competitive advantage in fashion derives from its high quality workmanship. High quality workmanship, मतलब वो लोग Italian people, they develop their garment on their own. आप सर्च करके देखो किसी Italian designer के बारे में, and you would find आपको वो डिजाइनर खुद भी आपको दिखेगा अपने garments बनाता हुआ, अगर उसके past को सर्च करोगे तो. So you would find that they are very clear about workmanship. उनको बहुत ही अच्छे से finished garment चाहिए, and they don't mind getting into it, as in themselves developing it. And the elegant styling of knitwear, sportswear, and accessories. And in accessories, what in particular? Leather shoes and bags, right? So इनकी styling पे ये बहुत ध्यान देते हैं. Here are a few more designs, Italian designers, their collection. Let's go further. So what is popular in Italy? The Italian ready-to-wear industry. It developed, and the couture industry also developed. But जो ready-to-wear industry है, वो couture industry से भी पहले, उसने export start कर दिया था, ठीक है? So the Italian ready-to-wear industry developed along with its couture industry, that is high fashion industry. But
the former started exporting earlier than the couture. हमेशा couture बाद में ही export होना शुरू होता है, पहले ready to wear export होता है किसी भी डिजाइनर का, मोस्टली ऐसा ही होता है, बिकॉज रेडी टू वेयर के लिए मासेस रेडी होते हैं परचेज करने के लिए, एंड couture के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्लाइंटेल चाहिए होता है. Italian goods command a very high value in the country and in foreign markets. And what is the reason behind that? It is excellent standard of their design aesthetics and the high quality of Italian textiles. बहुत important है ये paragraph in particular because ये exam में बिल्कुल आ सकता है. That is, you need to learn it nicely. किस चीज के लिए वो famous है? Product quality. और वो किस पे based है? It is based on excellent standard of their design aesthetics. They're maintaining very good standard of their designs, and they also use high quality of textiles. और textiles भी fabric भी कहाँ का? इटली का ही. So Italian fabric बहुत famous है. As in, people who go to Milan, वो हमेशा, it's the bestest way to go, place to go for attending the trade fairs that are related to the textile industry. Even today, the fashion industry thrives on the support of the Italian government. So Italian government is helping and providing support to the designers in Milan. Milan has become the major staging ground for Italian ready-to-wear shows. And so in Italy, Milan is one of the places जहाँ पे mostly आपके ready-to-wear shows होते हैं, ठीक है? But एक सिर्फ इटली नहीं है, और भी जगह है. So in fact, many ready-to-wear companies in Florence have relocated to the north, and they show both in Milan as well as Florence. So बहुत सारी जो ready-to-wear companies हैं, what have they done? They're not just in Milan selling their products, but apart from Milan, वो Florence में भी अपने garments को sell कर रहे हैं. So this is the beauty of this one particular fashion capital. After Milan, the third fashion capital for discussion is New York. So New York, इतना thickly populated place है, I would say, कि and it's one of the expensive place in the world as well. But वहाँ पर न्यूयॉर्क में किस टाइप की गारमेंट्स वो लोग पहनना पसंद करते हैं, या I should say कि why or what is the special feature of the garments in New York? So it is practical and wearable garments. Practical garments or wearable garments. और किसको aim कर रहे हैं, उनका target customer कौन है? Average consumer. So what do they keep in mind? They keep in mind that the garment should look good, it should feel comfortable, and it should also suit the lifestyle of the person wearing it. So it is, I would say, covers the masses, because average consumer तो masses ही है. और masses को क्या चाहिए? उसको हमेशा एक high fashion garment नहीं चाहिए, but what masses want is he or she looks for very comfortable garment. He or she looks for something that is that looks good. देखने में अच्छा लगता है, पहनने में comfortable लगता है, और मेरे lifestyle को suit करता है. These are the three main things that they look for, and this is the approach that the American designers also take care about. They earned a reputation of being the first country to create active and casual wear brands, right? So ये बहुत important है, as in you should know कौन सा fashion capital is famous or is known largely for, and what kind of garment did this particular fashion capital develop. So activewear और sportswear सबसे पहले न्यूयॉर्क में बना था. And now who are the designers? Well-known designers of New York. So it's Claire McCardell, Donna Karan, and Anne Claire. Then apart from that, ready to wear में क्या-क्या garments यहाँ पे बनते हैं, बहुत popular है. So as I did mention, very comfortable garments. ठीक है? So we have jeans, we have wrap skirts, we have jogging pants, sweatshirts, bodysuits, tracksuits. You should know these names. Children, I would suggest कि आप एक list जरूर बनाना, wherein you write at least names of five designers of all these five fashion capitals. So London की already book में दिया है,
न्यूयॉर्क का ये 3 डिजाइनर्स आपको दिए हैं, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 5 के नेम्स जरूर लर्न करिए. Most leading fashion designers have their offices in New York. Twice a year, the members of the international fashion industry come together in Midtown Manhattan to conduct business worth billions of dollars. So, कहाँ पर होता है? ये न्यूयॉर्क में फैशन शोज ट्वाइस अ ईयर होता है मैनहट्टन में, मिड टाउन मैनहट्टन में. They scout new ideas, new designers, and above all are alert of a unique commodity, the reality factor. So इनके garments में reality factor होता है because वो practical garments होते हैं. And the American designers, who are they? They are very excellent marketers. जो उन्हें पता होता है, वो सेंस कर लेते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसके लाइफस्टाइल को क्या सूट करता है. ठीक है, एंड दे डेवलप दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर द customer. So they are excellent marketers who sense the pulse of customers and proactively cater to their desires and lifestyle choices. So here, apart from them being the very first kind of casual wear, active wear brand, another thing for which they are very popularly known is कि यहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत मेजरली वर्क करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे. नए नए फाइबर्स की डेवलपमेंट होती है, उनकी टेस्टिंग होती है, न्यू फैब्रिक्स आर आल्सो डेवलप्ड एंड देयर टेस्टिंग आल्सो हैपेंस हियर. तो ये 3 फैब्रिक्स हैं, अगेन द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नाइलिन, पॉलिएस्टर, लाइक्रा. ये 3 मटेरियल्स फैब्रिक्स जो है यहाँ पर बने थे. ठीक है, इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो इनको नेम्स मिले वो भी यहीं मिले हैं और ये बने भी यहीं पर ही थे. और 2 स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड्स हैं वेरी फेमस, आप सर्च करोगे आपको मिलेंगे, जो यूएस के हैं. ठीक है, सो दैट इज अनदर थिंग दैट नीड्स टू बी learned here nicely and properly. Let us now move to the next fashion capital. This is the 5th fashion capital, that's Tokyo. Tokyo is in Japan. So Japan में क्या है, उनके जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है उनका फैशन उसी पे ही से ही लिंक्ड होता है. ठीक है, सो हियर आई हैव 2 पिक्चर्स जहाँ पे एक साइड पे आपको उनकी टोटली ट्रेडिशनल क्लोथिंग दिख रही है, दूसरी साइड पे उनका मॉडर्न वर्जन है. सो जापान हैड बीन एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल क्लोथ्स until recently, but अभी भी अगर आप देखोगे तो उनमें modern design approach दिखेगी, but they have their own unique way of styling the garments. So the Japanese production industry has transformed by developing a unique style that blends traditional Japanese aesthetics and garment making, interpreted through modern design approach. Now, these are the individuals, Japanese, उनका जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है. तो इसीलिए हमारी गारमेंट इंडस्ट्री में भी जो मशीन्स है, मोस्टली जो सोइंग मशीन, फिनिशिंग, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो ब्रांड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली जापानीज होते हैं. द वेल नोन वंस आई वुड से जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं. सो today the fashion industry in Japan is at top of the list of growth industries including fashion. Some Japanese designer labels are famous for their conceptual approach. So example यहाँ पे दिए हैं 2 designers के, उनकी कुछ यूनिक डिजाइन है जिसकी वजह से उनके एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. एक है कॉम डेस गार्कन्स और दूसरा है वाइज लेबल, जो योजी यामामोटो, एक काफी फेमस जापानीज डिजाइनर है, उसका है. सो कॉम डेस गार्कन्स का मीनिंग होता है लाइक बॉयज, फ्रेंच टर्म है, जिसका मीनिंग है लाइक बॉयज, एंड इट इज अ जापानीज फैशन लेबल which is founded by the designer Rei Kawakubo. Please ये learn करना है आपको, अच्छे से ये learn होना चाहिए. The name, the French term, label name, that is Comme des Garcons, and the designer who is behind this label. Now, it is renowned for its avant-garde aesthetic and unconventional silhouettes. So this particular brand is known for the kind of
independent styling, I would say. Avant-garde is unique styling of the designer. उसकी वजह से ये जाना जाता है. To capture the world market, Japan lays emphasis both on its textiles and apparel industry. So not just the textile industry, but the apparel industry is also taken care very nicely by the Japanese designers. And the Japanese designers, like other designers, what they do, वो international trade shows में participate करते हैं और उनके offices यूरोप और न्यूयॉर्क में है. तो ये question भी कई बार आया हुआ है कि how do the Japanese designers capture the world market. So this is the point that you're supposed to write down. First point is that they captured the world market because पहले वो अपनी जो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है वो उस पर बहुत ध्यान देते हैं. They lay a lot of emphasis on that. And two, the designers participate in trade shows and they also have offices in major cities like New York and in Europe as well. So उससे क्या होता है, वो लोग they get to know about what is happening at the other places, what kind of development is happening, and then they are able to also develop their product accordingly. Now, sources of fashion trends. Now, what are the sources? कहाँ से हम we get to know about what is in, what is out. So, एक होता है जो फैशन शोज होते हैं, जो बाय एनुअल कुतूर शोज होते हैं या जो प्रति पोते शोज होते हैं. बाय एनुअल मतलब साल में 2 बारी, ठीक है, शोज कर रहे हैं डिजाइनर्स. सो दैट इज अ बाय एनुअल कुतूर शो. और प्रति पोते शो इज द रेडी टू वेयर shows that the designers do in these 4 big fashion capitals. देखो इन 4 big fashion capitals में टोक्यो का नाम नहीं लिखा हुआ. At the time of the show, all the partners in the fashion value chain, partners कौन होते हैं fashion value chain में, जिन लोगों ने contribute करा है उस fashion के development के लिए. Like we have fashion manufacturers, fabric manufacturers, garment manufacturers, buyers, retailers, fashion editors, fashion designers. All in all the people involved in the development of a garment and the sale of the garment, they're all part of the fashion value chain. After the shows, the fashion editors select that they consider to be prophetic. That is, that fits to the market, the current market situation, and feature the stories with glossy pictures in fashion magazines and newspapers as the upcoming trends. So वो क्या करते हैं फिर पेज 3 पे आपका न्यूज़पेपर्स में आएगा, magazines में आएगा, उनके बारे में information, and that is how the customer gets to know about these trends and it becomes fashion. The retailers and manufacturers rely on professional trend analysis by trend analysts and agencies. So जो retailers होते हैं, जो shopkeepers होते हैं और जो manufacturers होते हैं, वो किस पे dependent होते हैं? Fashion के बारे में जिनसे information मिले, they are dependent on trend analysts. और proper agencies होती हैं, ये आप लोगों ने 11th में भी किया था. And ये proper agencies होती हैं who are responsible for forecasting, who are responsible for trend analysis. वो उनसे data collect करते हैं and then accordingly वो decide करते हैं कि हमें अपने showroom में क्या चीजें display करनी है, या manufacturer decide करता है कि मुझे अपने manufacturing unit में क्या चीज produce करनी है. Based on their experience of trend analysis, the forecasters are able to correlate the changing lifestyles of the consumers to the sub-trends for various market segments. So that is how they are able to analyze that in which market, which style would go good for them, because everybody is there to earn profit and also to stay in the market or stay in the business for a longer time period. The preferences and aesthetics of the American consumer, for example, are different from Italian or British consumers. Correctly said, हम लोगों को इंडिया में हमारी जो aesthetic requirement है, हमारे जो preferences हैं, वो different होंगे than the people in US. US का different होगा UK से, and that is how the fashion is different in all the countries. The trend forecast books predict the color palette, fabric trends, surface treatments, silhouettes, and design details for the next season.
सो ट्रेंड फोरकास्ट क्या है, प्रिडिक्ट करते हैं वो, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, प्रिडिक्ट करते हैं फैशन को, so ऐसे ही ट्रेंड फोरकास्टर्स ट्रेंड को प्रिडिक्ट करते हैं, पर वो एडवांस में प्रिडिक्ट करते हैं, से नॉट 1-2 months बट अराउंड 1 or 2 seasons in advance they do the planning. और उनके ट्रेंड फोरकास्ट में क्या क्या चीजें कवर होती है, कलर, the color palette as in the variety of colors that would become popular, फैब्रिक, किस टाइप के फैब्रिक्स इन होंगे, किस टाइप के सरफेस के ट्रीटमेंट्स इन होंगे, लाइक what kind of embroideries, prints, finishing be in, silhouettes would be the cut. So it might be A-line dresses this season, flared the other season, short the next season, and that is how. And then the design details, as in what kind of finishing be given to that, pin tucks dene hain, gathers dene hain, that is all part of trend forecasting and analysis. Next to this is emergence of India as a fashion center. So as I did mention कि India भी एक, it is emerging to be a fashion center, पर वो कैसे start हुआ and how it is going further. So India अब इस stage पे है कि हम technologically we are doing good. We have people who like to work hard, and we have the right kind of infrastructure to help us out. And that is how India is growing further and further. So India's emergence as an economically strong country in the last decade is attributed to its colossal information technology industry, back office operations for the international market, and opening of its markets to foreign companies and brands. So India opened its market not just for the domestic brands, but also for foreign brands, international brands. So when you have international brands entering in your country, you are able to see how people are responding to that. The increase in the annual income of the average household led to an increase in the purchasing power of its population. So हमारी country की purchasing power क्या है, बहुत strong हो गई है. उनकी लोगों की disposable income बहुत strong, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, and that is how, from the domestic they have moved to international brands. From the international brands ready to wear, they've moved into the couture brands. That is how because the economy is becoming strong, that is how the spending power of the people are also becoming better. In terms of fashion, there has been a rise in the requirement for formal office wear, कैजुअल वेयर, क्लब वेयर एंड फॉर्मल एथनिक वेयर. ये सब चीजें क्यों बढ़ गई हैं? पहले तो सिर्फ कैजुअल वेयर ही होता था और फॉर्मल वेयर होता था, बट अब फॉर्मल में भी फॉर्मल ऑफिस वेयर, बिकॉज दैट इज द डिमांड ऑफ द वर्क प्लेस. कैजुअल वेयर, क्लब वेयर, बिकॉज उनके पास में लेजर टाइम होता है, तो उसके लिए क्लब वेयर अलग है, और एथनिक वेयर फॉर फॉर्मल ओकेजन्स एज वेल. The access to global fashion through the internet and social media has surrounded the Indian consumer with the influence of heterogeneous cultures, within which emerges the need to establish an individual identity. So because you have wide variety of, I should say, बहुत सारे cultures हैं India में, and to help them all, you have different styles that come up, different set of consumer respond differently to all those styles, and each consumer, what they want identity, they want individuality of theirs to be depicted. वो चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी उसमें शो हो जब वो एक गारमेंट पहने. तो कौन हेल्प कर रहा है उनको? इंटरनेट हेल्प कर रहा है उनको, सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है टू रीच आउट टू वेरियस प्लेसेस. So after this, let's go further. India's history is associated with heritage weaves. What is India famous for? The weaves, crafts, and skilled labor. And that is all that's helping not just the Indian designers, but Indian brands also to grow further. और उसको वो एज अ लेवरेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एडवांटेज के जैसे यूज कर रहे हैं, और उस इन डिजाइन्स को अब वो इंडिया के बाहर भी ले जा पा रहे हैं. सो बहुत सारे इंडियन डिजाइनर्स हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हमारी बुक में दिए हैं, साबिसाची मुखर्जी, मनीष मल्होत्रा, राहुल मिश्रा. ये सब डिजाइनर्स जो है, मनीष अरोड़ा,
ये सब डिजाइनर्स हमारे जो है इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड शोज में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे हेल्प टेक इंडिया टू अ डिफरेंट लेवल. Indian handicraft, Indian weaves are so very famous in the international market that people, not just the international designers, masses over there, they die, they're just dying to have it. In India, fashion weeks produced by FDCI in Delhi and Lakme Fashion Week in Mumbai give a platform to emerging and established designers to showcase their talent. FDCI जो है फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया है, और जो इंडियन डिजाइनर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पार्ट ऑफ एफडीसीआई. एंड व्हेन यू आर पार्ट ऑफ एफडीसीआई, यू गेट एन एडवांटेज, एंड दैट इज एफडीसीआई कहीं पे भी फैशन शो करता है, फैशन वीक करता है, तो वो इन डिजाइनर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो अपने डिजाइन्स को डिस्प्ले कर सकते हैं in the form of a exhibition, in the form of a fashion show. They can invite their clients over there. The fashion market, though nascent in India, has grown over the years, and it also allows the entry to international retail brands. So not just the Indian industry that's growing, but also we are inviting international brands in the Indian retail market too. These business opportunities and challenges are changing the organizational structure and working of the Indian fashion industry. And with this, what is happening? जो customer है, अब वो बहुत demanding हो गया है. Now the customer wants a lot of, very good finish to their garment, new styles, and no more the customer is loyal towards a particular brand. So अगर स्पोर्ट्सवेयर मुझे कुछ पसंद आ रहा है एडिडास का, तो मैं एडिडास का ले लूंगी, और उसके बाद में बाहर निकल के शॉप से अगर मुझे अच्छा लग रहा है कुछ स्पोर्ट्स वेयर प्यूमा का, तो मैं प्यूमा से भी ले लूंगी, या हो सकता है नाइकी से ले लूं. सो दे आर नॉट लॉयल टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर ब्रांड, एंड दैट इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रांड्स, नॉट जस्ट द इंडियन ब्रांड्स बट द इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑल्सो, टू ग्रो इन द इंडियन मार्केट. जो अच्छा करेगा वो ज्यादा टाइम तक रहेगा. दिस इज द मंत्रा हियर. So with this, we complete this particular chapter. That's chapter 3.2, Fashion Capitals. I hope you liked it. And in case you liked it, please do strike a like button and also share it with your friends. Thanks for watching.